પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દીમાં પહેલો પાઠ છે યાતાયાત। તો એની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયનો જે પ્રશ્ન 5 છે કહાની લેખન, આપણે ચિત્ર જોવાનું છે અને એના આધારે કહાની લખવાની છે, વાર્તા લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અહીંયા શરૂ કરીશું કે આ જે પહેલું ચિત્ર છે એ પહેલાં ચિત્રની અંદર આપણે જોઈએ તો એક ચરવાહો છે, એ ચરવાહો ભેળ બકરી ચરાવે છે। બીજા ચિત્રમાં જોઈએ તો એ બૂમો પાડી રહ્યો છે। ત્રીજા ચિત્રમાં જોઈએ તો કેટલાક લોકો એની મદદ માટે આવે છે અને ચોથા ચિત્રમાં જોઈએ તો એ લોકો પાછા જતા રહે છે। ફરી ખરેખર જ્યારે વાઘ આવે છે ત્યારે બૂમો પાડે છે પણ કોઈ આવતું નથી અને છેલ્લા ચિત્રમાં આપણે જોઈએ તો એ વાઘ એના ભેળને મારી નાખે છે અને ખાઈ જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આની વિસ્તૃત સમજ પ્રાપ્ત કરીએ। તો કહાની આપણે વિસ્તૃત જોઈશું। તો करणपुर नामक एक गांव था। ये पहला चित्र के आधार पर हम कहानी लिखेंगे। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां चराता था और अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक उसे मजाक करने की सूझी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेत के जो लोग थे वो दौड़कर आते हैं। चरवाहा हंसने लगता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। चरवाहा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। यह सुनकर जो लोग उसकी मदद के लिए आए थे वो वापस चले जाते हैं। सब उसे कोसते हुए लौट गए। कुछ दिनों के बाद जब सचमुच में बाघ आया और वो चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन सबने यह सोचा कि चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और जो बाघ है वो बाघ भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। उसे पछतावा हुआ कि उसकी बुरी आदत के कारण उसे ये भेड़ बकरियों का नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए वह पछताता है कि अपनी बुरी आदत के कारण वह पछताने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मजाक करना नहीं चाहिए। जब हम मजाक करते हैं तो जब हमारी बात सच होती है तो कोई उसे मानता नहीं है, उस पर यकीन नहीं करता। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको इस वार्ता का हेडिंग लिखना है, चरवाहा और बाघ, और ये वार्ता लिखनी है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न 6 में। तो प्रश्न 6 में है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी कि गुजराती भाषा में हमें यह वाक्य का अनुवाद करना है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, એટલે કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું, મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી है, એટલે કે મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આમાં જોઈશું ફરીથી। પહેલું, કમલ हमारा राष्ट्रीय फूल है, તો કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, मधमाखी फूल पर बैसे छे। तीजू, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बળદગાડા में बेसवानुं गमे छे। चौथुं, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं,
ઓટો રિક્ષાને 3 પૈડા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે. હવે આપણે અહીંયા કેટલાક શબ્દો છે જે અહીંયા ગુજરાતી આપેલું છે, આપણે હિન્દી જોવાનું. સાયકલ તો સાયકલ, રિક્ષા તો રિક્ષા, ટ્રેન તો ટ્રેન, વિમાન તો વિમાન, સ્ટીમર તો સ્ટીમર, બળદગાડું તો बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी तो टांगा और घोड़ागाड़ी, स्कूटर तो स्कूटर, बस तो इसे हिंदी में बस कहते हैं, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर, जहाज को जहाज, गाड़ी को कार, ऊँट गाड़ी को ऊँट गाड़ी और मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल कहते हैं. तो इस तरह से आपको पाठ 1 का जो स्वाध्याय का प्रश्न 5 और 6 है वो आपको हिंदी की नोट में अच्छे अक्षर से लिखना है. प्रणाम.